মহোদয়ক আদৰণি জনাইছে, আন্তৰিক আদৰণি জনাইছে। আৰু ইয়াত কন্যাকাৰ উৎপাদিত ফসল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অত্যন্ত আহ্লাদিত হৈছে। এতিয়া আহক আমি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ আমি সাক্ষী হৈছোঁ। কন্যাকাৰ চোতালত আজি এক অপূৰ্ব পৰিৱেশ। এয়া আমাৰ ৰামুক আদৰণি জনোৱাৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সমষ্টিৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক আমাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ অতি প্ৰিয় এয়া ৰামুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আদৰণি জনাইছে। এই ৰামুৱে যেতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বনৰীয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাই ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা এয়া আমাৰ মৰমৰ ৰামু। আজিৰ পৰা মাত্ৰ 2 বছৰ আগতে গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত যেতিয়া ৰাজেন নামৰ হাতীটোৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেতিয়া ৰামুৱে গৈ ৰাজেনক কৰায়ত্ব কৰি ৰাইজক এই তাণ্ডৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। এয়া ৰামুৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এয়া আদৰণি জনাইছে। প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ৰামু চালাম ৰামুকো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এয়া ৰামুক আদৰ কৰিছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাণী আৰু মানুহৰ এই সম্প্ৰীতিৰ সাথী আজি আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এক কন্যাকাৰ চোতালত जो हमारा प्रोजेक्ट है एक्सटेंड कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है up to 50,000 से डबल पर तो हमारा कल हमें मिशन एक्टर को कॉल एक्टर को ओनर इसको समझा अग्रवाल ये हमारा एक्सपांडिंग कॉमन चीज क्या क्या रहेगा, खाली क्या लगाने से एक्सपांड हो जाएगा। इसमें कुछ हमको करना एजिंग लाइन रहेगा, वो कुछ एक्सटेंशन होगा। और दूसरी बात पद्मन का चीज़ हमारे यहाँ गुजरात में फैक्ट्री में गए थे तो इनको हमने कुछ प्लान्स दिखाए तो उन्होंने बोला ऐसा का ऐसा ही हमको असम में भी चाहिए। हाँ, तो हमने एक मल्टीपर्पज़ स्पेशलाइजेशन प्लांट जो आप देखें ये हमने स्पेशली গাখীৰ আমি দুটা ভেৰিয়েণ্ট কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ যোনটো পেষ্টাৰাইজ যিটো ফৰ্মেল গাখীৰ, এইটো হৈছে ধৰক আপোনাৰ মিঠাই বনাবলৈ কাৰিকৰত লাগে নহয়, এইটো চানা বেছিকৈ ওলায়, এইটো কন্যাকা গোল্ড, আমি গোল্ড উলিয়াইছোঁ। আৰু যেতিয়া নতুন প্লানটো আৰম্ভ হ'ব আমি আৰু এটা ভেৰিয়েণ্ট উলিয়াম ফৰ দি ৱেট ৱেটছ, মানে কন্যাকা লাইট বুলি জিম গোৱাৰ্ছ থাকে বা যদি কোনোবা হেল্থ ইছ্যু থকা মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ যাতে ফেট কণ্টেণ্ট বেছি নহয় আমি উলিয়াম। বাকী আধা চাউলটো আছে কন্যাকাৰ। কন্যাকাত আপোনাৰ মালিকী মাধুৰী 3 টকা বাটাৰটো বৰ্তমান আমি এমচি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। বাকী আমাৰ এইটো মিঠা দৈ আছে, তাৰপিছত এইটো আমাৰ প্লেইন কাৰ্ড নৰ্মেল দৈ। আৰু আমি সদায় বহাগ বিহুৱে হওক মাঘ বিহুৱে হওক আমি কেতিয়াও টেকেলি দৈ এৰাই চলা নাই। এবাৰো বহাগ বিহু আহি আছে, গতিকে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ টেকেলি দৈ 1 লিটাৰ 2 লিটাৰ আমি পঠিয়াম। গতিকে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছো বেনিফিট হৈছে আৰু যোনসকল শিল্পীৰ লগত শিল্পৰ লগত জড়িত তেওঁলোকো বেনিফিট হৈছে, তেওঁলোকক আমি লৈ আছোঁ। এনেই সাধাৰণতে জেগা জেগাত আপুনি টেকেলিটো ইমান কোৱান্টিটিত নাপায়, কিন্তু আমি সেইটো একদম ধৰি ৰাখিছোঁ। টেকেলিটো আমি एक्सपांडिंग कॉमन चीज़ क्या क्या रहेगा, खाली क्या लगाने से एक्सपांड हो जाएगा। इसमें कुछ हमको करना एजिंग लाइन रहेगा, वो कुछ एक्सटेंशन होगा। और दूसरी बात पद्मन का जी हमें गुजरात में फैक्ट्री में गए थे, जब गए थे तो उनको हमने कुछ प्लान्स दिखाए थे तो उन्होंने बोला ऐसा का ऐसे ही हमको असम में भी चाहिए। सही, हाँ। तो हमने एक मल्टीपर्पज़ स्पेशलाइजेशन प्लांट वाला जो आप देख रहे हैं ये हमने स्पेशली हमारे यहाँ से डिज़ाइन होता है इंडिया में अभी, और इसके अंदर में एक सिंगल प्लांट में हम लोग वेरियड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कॉम्पैक्ट है, प्लस इसके अंदर में सारा जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो सब स्टेट ऑफ द आर्ट के हिसाब से हमने प्लांट को डिज़ाइन किया। तो इसके अंदर कहीं भी कोई भी आइटम जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ऐड हो सकता है। और अभी आने वाले टाइम में जैसा इनका प्रोग्राम है, कुछ आइसक्रीम भी यहाँ पर इनको काम करना है, डिफरेंट भी करना है, फ्लेवर्ड भी करना है, लस्सी करना है,
वो चीज़ें भी इसी के अंदर से हम निकाल सकते हैं, यही में से इसमें से निकाल कुछ एड ऑन्स होंगे, एजिंग बैट वगैरह कुछ एड ऑन्स होंगे, वो सब करने के और ये इट कैन गो अप टू 50,000 एक गो टू 30,000। सो पुरानाটো থাকিব 7,000 আৰু 20,000 27